Hello there, everybody. Welcome back to another reaction video. My name is Roderick, and today we're going to be reacting to Sahebs Who Never Left. Hopefully, I said that correctly. I've been mispronouncing names as of late, but you know what? I'm still learning. Sahebs Who Never Left is a video on YouTube that a lot of people have recommended to me, or requested at the very least, that I give it a little watch. A lot of people requested it. I don't really know what is up, I'm actually really interested to see what's about to go down in this little documentary here. Now, there is a disclaimer here. First and foremost, as soon as I loaded the video, quick little disclaimer. This content is not meant to offend, degenerate, malign, defame, slander, disrespect, or hurt any feelings, any feeling, religion, country, community, caste, race, institution, political party, person, living or dead, living or dead religion, society and its culture, traditions, and practices. The filmmakers fully acknowledge and respect other perspectives and viewpoints with regard to the subject of this film. This documentary is made just for sharing information based on research work of different authors, research writers over the time. Some part of the film has been created by dramatizing the events for cinematic expression with the help of artists. Subject matter of this series may be sensitive in nature. Viewer discretion advised. Well, there is that, I guess. Consumption of alcohol, cigarette smoking is injurious to the health. The producer, director, artists, and or other associated with this film are all law-abiding citizens and have not created this film to incite or any disorder or lawlessness. Only information as per the research works. So I don't really know what I'm getting myself into. Most YouTube videos don't have a disclaimer like this at the very beginning. Some may have like a fair use disclaimer, or if it's like a super tragic subject matter, they might do something. So I'm assuming this is that. But I've had a lot of people want me to take a look at this, so I think I will. Should I look at the description? I think I should. Sahebs Who Never Left is a film that ties together ideological subversion as explained by KGB defector Yuri Bezmenov in the 1970s to the history of India. Okay. How Islamic invaders like Sher Shah Suri initiated a domino effect of creating subservient operators who were later adopted by East India Company, becoming the cream of the society. Okay. Then the film draws a parallel that how the freedom movement of India was also hijacked by these brown sahibs and ultimately led to what every subversion leads to, the partition of India in a bloody civil war. Hmm. Okay, so it's going over some of the history, the pre-modern India history, which I have looked at before. I've looked at quite a bit of pre-modern history, so I kind of have a general understanding of potentially what that is. This is the first of the 10 uh, Indic, Indic. It does say Indic. I wonder if it's meant to say Indic or India. I don't know. Film series. Sahebs Who Never Left 2. I think Sahebs Who Never Left 2 is actually out. Okay, well, don't know exactly what we're getting into, but I'm excited to watch. Ooh. 1970 का दशक सोवियत Oh, right. Okay, hold on. I do believe that this is. Oh, it does actually provide English subtitles. Perfect. Okay. So it is in Hindi, but they have created English subtitles for me to watch. Perfect. 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 संघ के एक प्रोफेशनल प्रोपेगेंडिस्ट यूरी बेजमेनोव ने यूएसएसआर से डिफेक्ट करके अमेरिका में शरण ली। केजीबी ने पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फैलाने के लिए जो Yeah, I know we're 16 seconds in, but yeah, I do just want to know that yeah, the KGB is pretty notorious. भयावह तरीके ईजाद किए थे, बेजमेनोव ने वो सभी राज दुनिया के सामने खोले। उस प्रोसेस का नाम था आइडियोलॉजिकल सबवर्शन। सबवर्शन की बात दुनिया के सामने भले ही 1970 में आई, पर उन टेक्निक्स का इस्तेमाल विश्व के कई साम्राज्य हजारों सालों से करते आए हैं। ब्रिटिश साम्राज्य भी
उनमें से एक था। इस्लामी लुटेरों से कहीं ज्यादा शातिर ब्रिटिश ने 200 साल तक भारतीयों को ही अपना एजेंट बनाकर भारत पर शासन किया। लुटेरों के इरादे तो समझ आते हैं, पर ये भारतीय कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया? उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत में इतने ज्ञान और वैभव के रहते हम अचानक इतने कमजोर कैसे पड़ गए? हम दूसरों से नहीं बल्कि अपनों से हारे। जो इतिहास हम सबको बताया गया है, ये वो कहानी नहीं है। ये कहानी है भारत के सच्चे इतिहास की, भारत की आइडियोलॉजिकल सबवर्जन की। Hmm. So okay, so we're gonna go into quite a bit here that I can already tell, and I will say this based off what I've learned. The northern parts of India have constantly through the ages, have had conflict, right? A lot of invaders came through, a lot of empires, a lot of nations, fighting and battling and taking over land. Um, there's just been so much of that. Now for the South has been a lot more unified for a longer period of time. Not saying that they haven't had conflicts, because from what I've seen, they 100% have. But yeah, specifically like the northern parts of India, there's been several times from what I've seen where there would be like a group of invaders coming from the outside, be it the Moguls, be it whoever. Um, and just cause strife, right? uh so I do believe like one of those instances was how the British were able to come in, sweep in, and kind of take over. But yeah, I guess we're getting into it. Top secret. How do you pronounce this channel? Prakyam? Prakyam? Is it Prakyam? Prakyam. I'm bad at names. स्वतंत्रता, आखिरकार क्या ये सच था? 200 साल की वो काली रात आखिरकार खत्म हो गई थी। अंग्रेज जा रहे थे बड़े बड़े जहाजों में भरकर इंग्लैंड के लिए। हमारे चेहरे तो देखने लायक थे। कल वो सुबह होगी जिसके लिए लाखों लड़े। बस कुछ दिन और, फिर सारे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी लोगों को बुलावा आएगा दिल्ली का। सब मिलकर भारत की एक नई कहानी लिखेंगे। अपना देश अब आजाद है, अब क्या फिक्र। पर वो बुलावा कभी नहीं आया। बंद दरवाजों के पीछे न जाने किन किन समझौतों पर साइन किए गए। फिर अचानक से शोर हुआ कि 10 हफ्तों में देश हिंदू मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। इस Yeah, so when the British came through and decided to do this as well, divide the country between Hindus and Muslims, I just actually watched a video going over like Bangladesh and how it had, how it was, India was split between India and then Pakistan, and it was East Pakistan and West Pakistan, and Bangladesh was having strife with Pakistan, or like pre-Bangladesh, now Bangladesh. But it seems odd to separate a country just solely based on religion, right? Defining land borders and barriers seems a little counterintuitive. सिंधु सरस्वती की गोद में हमारा जन्म हुआ था। कुछ ईसाइयों ने हमसे वो छीन ली। हिंदू मुसलमान एक दूसरे को काट रहे थे। लाशें गिनने वाला कोई नहीं था। मगर अपने नेता क्या कर रहे थे? इन सब ने गोरों को ये करने क्यों दिया? इन सब से बहुत दूर वॉइसरॉय आवास पर उस शाम शैंपेन खुली। माउंटबेटन ने इंडिया के नाम टोस्ट किया। नेहरू जी ने हंसते हुए जाम उठाया और कहा, टू किंग जॉर्ज द सिक्स्थ। हमें लग रहा था कि 1947 में गोरे साहब चले जाएंगे। हम गलत थे। कुछ साहब ऐसे भी थे जो कभी Okay, so it's Sahab.
I called it Sahib, but it's Sahab. So the intro, I apologize for mispronouncing the name. Sahab. Okay. गए ही नहीं। And now we're actually into the video. For some of you, you may be questioning why I pause so much. It's just something how my बात है reaction आज and से commentary 1000 साल goes. पहले की। भारत इस्लामिक लुटेरों से जूझ रहा था। सिंध के इस पार भी अब इस्लामिक तानाशाही थी। पैसे जनता से लूटे जाते थे, पर बड़ी जोर जबरदस्ती करनी पड़ती थी। लुटेरे तो मुट्ठी भर ही आए थे, पर करोड़ों जाहिलों को कौन संभाले? आखिर कितने सर काटे जा सकते थे? शेर शाह जैसे अफगानों ने यहीं के लोगों को लेकर शिकदारों की फौज बनाई। हर शिकदार के नीचे सैकड़ों सैनिक। अकबर के समय में ऐसे सैनिक लगभग 44 लाख थे। इनका काम होता था गरीबों की आत्मा में सरकार का डर बनाए रखने का। इन्हीं फौजों में होते थे दरोगा, दरोगा साहिब, जिनके पैरों की आहट से ही भूखी नंगी जनता कांपने लगती थी। अब साहिब शब्द को आप देखें तो साहब किन को कहते थे? ये जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला था, जिसे पैगंबर बोला जाता है इस्लाम का, उसके साथ जो लोग थे जिन्होंने उसे जीवित अवस्था में देखा। ऐसा कहा जाता है कि वो इतने महान थे कि उन्होंने उस व्यक्ति को देखा, इसलिए वो साहब थे या सहाबा थे। ये जो शब्दावली थी वो आज भी आप देखें चलती है कि दरोगा साहब के पास चले जाओ, दरख्वास्त लेके जाओ। अब जनता के सामने तीन रास्ते, या तो धर्म बदलकर समझौता कर लो, या जिम्मी बनो, या फिर सर कटवाओ। ज्यादातर लोग जिम्मी बनकर रहते थे। गलती चाहे जो करे, सजाएं सामूहिक रूप से दी जाती थी। साहब सुनते ही जिम्मी वाली फीलिंग आती है कि हम आज भी जिम्मी हैं। साहब ने बुलाया तो झुक के जाना है, उनके आगे सलाम करना है। जिम्मी बनकर रहो तो बेइज्जती सही, पर कम से कम जीने को तो मिलेगा। थोड़ा दबकर जी लेंगे, जिजिया दे देंगे, पर जान तो बच जाएगी। सैकड़ों साल जिम्मा उठाते उठाते साहबों का डर हमारे अंदर घर कर गया। हमारी सभ्यता का आत्मविश्वास टूटता गया, जबकि बाकी दुनिया तेजी से आगे निकल गई। राम राज्य जैसे विचार अब जनमानस में बस एक बहुत पुरानी स्मृति भर थे। अब तो बस यही रहता था कि कौन सा लुटेरा जा रहा है और कौन आ रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में आसानी से बंगाल जीत लिया। अरबों खरबों की संपदा वाले राज्य अनगिनत थे। असली चुनौती थी अपने से कई सौ गुना बड़ी आबादी को काबू में रखना। I can still never get over how recent in history all of this was. Like I don't know. It just it feels the timing, the time frame of it just feels so recent. It's only a few generations back, right? पर ये जनता अलग थी, डरी हुई थी, और इस्लामी काल के मुलाजिम भी नौकरी खोज रहे थे। The highest art of warfare is not to fight at all, but to subvert anything of value in the country of your enemy. That's exactly what's happening. Oh my God, that's actually happening quite a bit right now, with a lot of different things, specifically in and around the U.S. I will say I'm not a big fan of TikTok. I do think TikTok is a subversion tool by the Chinese Communist Party, right? The CCP. Um, that's a whole other topic, but yeah, the subversion and casting doubt, and I think it's even like a communistic, like Marxist thing, right? Where the way to it's written in like the Karl Marx book, the way to destroy your enemy is not necessarily to attack and conquer it with force, but to go in and change its culture. So Marxism and communism inside of like media, inside of books, TVs, movies, that sort of thing. Just I know it's not quite prevalent. I mean, is it though? I don't know. I'm just throwing I'm throwing my own 2 cents into the ring here. Anyways, back to the video. भारत का सामाजिक तंत्र, शिक्षा, धर्म, आदर्श
भले ही हमारी सभ्यता की विशेषता थे, पर हर समाज की तरह सैकड़ों सालों की गरीबी और भुखमरी के बाद कुछ समस्याएं भी पैदा हो गई थी। इन दरारों को भांपकर ब्रिटेन्स की आंखें चमक उठी। The Soviets used the phrase ideological subversion. What do they mean by it? Ideological subversion is the process to change the perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. It's a great brainwashing process which goes very slow, and it's divided in four basic stages. The first one being demoralization. This is literally what I was talking about. It was quite literally what I was talking about. That's wild. In case of religion, destroy it, ridicule it, replace it with various sects, cults, and taken away from the supreme purpose of religion, to keep people in touch with the supreme being. That's wild, because I'm seeing parallels to that. I understand this is a video, for India, but I'm actually seeing parallels right now, like current day, modern day US. भारत के समाज की सबसे गहरी जड़ थी हिंदू धर्म। इस सबवर्जन प्रोजेक्ट में कंपनी के ऑफिसर्स ने देश के कोने कोने से क्राइम्स और स्थानीय कुरीतियों को खोजकर समूचे भारत में स्वीकृत हिंदू कुरीतियों के रूप में कंपाइल करना शुरू किया। सबसे पुराना हमें हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट मिलता है वो है मेगास्थनीज का लिखा हुआ, जिसे इंडिका कहते हैं। आज से 2300 वर्ष पहले लिखा था। उसमें वो बताते हैं कि यहाँ पर कैटेगराइजेशन है समाज की, और जो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड है वो यहाँ के ब्राह्मण हैं, जिन्हें वो सोफिस्ट लिखते हैं। लेकिन वो साथ में एक बात बड़ी स्पष्ट लिखते हैं कि इस समाज में कोई भी चाहे तो ब्राह्मण बन सकता है, क्योंकि ब्राह्मण का जो जीवन है वो सबसे कठिन है। इस्लामी लुटेरों के काफी दुश्मन हिंदू अब ईसाई अंग्रेजों के हत्थे चढ़ गए। सैकड़ों किताबें लिखी गईं, जिन्हें इंडोलॉजी एक्सपर्ट्स आज एट्रोसिटी लिटरेचर बुलाते हैं। सती, देवदासी, ठग और ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की जैसे मुद्दे इसी प्रोजेक्ट की उपज थे। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में इब्राहिमिक फेस में स्त्री की क्या दशा है वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। हम तो एक स्त्री प्रधान समाज थे। ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की एक घिनौना शब्द है। ब्राह्मणों का योगदान इस देश की अस्मिता है, इस देश की जो प्रज्ञा है, इस देश में जो वैदिक संस्कृति का जो स्पंदन है, उससे कभी उऋण हो सकता है हिंदू समाज? ब्राह्मण्स आर लाइक द ब्रेन ऑफ हिंदुइज्म। उस ब्रेन को ही मलाइन कर दिया वामपंथियों मलेच्छों ने, और आप होने दिया हमने उसको। थोड़ा रुक के जरा देखो तो सही भाई, उपनिषदों का ज्ञान, गीता का ज्ञान, पुराण हमारे, महाभारत, रामायण, ये ज्ञान कैसे बचा? ब्राह्मणों ने बचाया श्रुति के द्वारा। औरंगजेब के लिए कहते हैं एक एक मण जनेऊ रोज उतरवाता था। किसके उतरवाता था? ब्राह्मणों के उतरवाता था। अगर ब्राह्मण इस देश में धर्मांतरण कर लेते तो हिंदू धर्म बचता? राजपूत लड़ पाते? किसके लिए लड़ते राजपूत? लैटिन और अंग्रेजी बोलने वालों ने गूढ़ हिंदू ग्रंथों को गलत सही ट्रांसलेट किया। कंपनी के इन साहबों ने भारतीय सभ्यता को एक खिलौने की तरह ऊपर नीचे से घुमा घुमा कर देखा, समझने का नाटक किया और मास प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी से खूब भ्रांतियां फैलाई। Distract people attention from Interesting. the real religious organizations with fake organizations. And it always starts with Ram Mohan Roy as the founding father of this neo-Hinduism. Ram Mohan Roy was an employee of the East India in Calcutta. in Calcutta. The allegation is that he started Hinduism with his own hodgepodge, what we call khichdi, a mixture. He started this thing, what today we would say is a muddled up sameness idea. The British had been talking all these things, but now for the first time is a very powerful, eminent, highly regarded, gentleman from India, an elite selling out. And he converted to the Unitarian Church. I mean, this is the typical sucking up to these guys, I'm so grateful, come and help us, we are not civilized, you please help us out and all that. Okay, so from what I'm understanding here is essentially what the video is trying to say is
when the British basically took over and they wanted to homogenize the country, so to speak, um, they fabricated a lot of the religious stuff, right? So they gathered the information. They would even would fabrication even be a correct term? Would it be more of like, I don't know, was it more of a mistake on their part, or was it intentional? Um, I mean, I guess with the video we'll probably continue to try to explain that, right? Either way, they intentionally or unintentionally translated things poorly, right? And then they use this man as a figurehead and then spread that translation to try to homogenize uh, everyone, all the different religions under the Hinduism in the country, right? Hmm. Okay. I think I still need to know a little bit more. Prototype brown side. इस सबवर्जन में कंपनी को राजा राम मोहन रॉय जैसे कई उत्साही भूरे साहब मिले, जिन्हें आज की तरह ही मान्यता और सम्मान का लालच देकर अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया। हाल ये था कि 1833 में राजा राम मोहन रॉय के निधन के बाद उन्हें ईसाई पद्धति से इंग्लैंड में दफनाया गया। Interesting. Okay. There obviously in every society there are people who are against this society. The moment all these movements will be directed in one direction, right? This is the time to catch that movement and to continue it until the movement forces the whole society into collapse, into crisis. Again, I'm bringing it into context for my own perspective, right? For my own country. Very recently, at the time of the recording of this video, there were protests of people inside this country of the U.S., of my country, saying "Death to America." They were chanting "Death to America," and it was in multiple protests, and it's just like, what exactly is going on, right? You can see that, if you watch social media now, right? You can see these things build up over time, but in the instance of like here in India back in the 1800s or the 1900s, you didn't have that social media. The news and information traveled very slowly, so what could have felt like what feels like a very sudden thing now, we can see it happening step by step. Back then it's just like it was just over time. It just was like just the way that things were done. I don't know, interesting parallels. अगला निशाना बनी भारत की हजारों सालों से चली आ रही जाति और वर्ण व्यवस्था। जब अंग्रेज भारत में आए तो 500 में से 400 से ज्यादा रियासतें शूद्र राजाओं की थी, पर सबवर्जन करने के लिए दरारों को और गहरा करना जरूरी था। गोरों ने वर्ण और जाति को कास्ट में बदल दिया, जबकि कास्ट एक स्पेनिश पोर्चुगीज कॉन्सेप्ट था। I thought he said the caste system was the Spanish Portuguese? को कास्ट में बदल दिया, जबकि कास्ट A Spanish Portuguese concept. I thought the caste system was already a thing in India before even the British came. एक स्पेनिश पोर्चुगीज कॉन्सेप्ट था, कास्ता, जिसका भारत से कोई लेना देना ही नहीं था। Nothing to do with India. I could have swore I've seen a couple videos recently. I could have swore that the caste system was around for a lot longer. उन्होंने रवांडा में भी कास्ट सिस्टम क्रिएट कर दिया। अब वहाँ तो कोई ब्राह्मण नहीं थे। जब आप अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित 1871 से बाद के सेंसस देखना शुरू करते हैं, तो हर सेंसस कमिश्नर को ये एक्सप्लिसिट ऑर्डर्स थे कि तुमने इनको कास्ट में लिखना है, कास्ट को कैटेगराइज करके लिखना है। और जो लिख रहा है वो अपने आप रिपोर्ट्स भेजता था कि यहाँ के लोग इस कास्ट को नहीं मानते हैं, लेकिन ऊपर बैठा ब्यूरोक्रेट बोलता था कि लिखना, इसलिए यहाँ पर वर्ण को, जाति को, कुल परंपरा को, सबको कास्ट वर्ड में ढाल दिया गया। और आज हम उसी के गुलाम होके ऐसा मान लेते हैं कि हम सदा से ही कास्टिस्ट सोसाइटी रहे हैं। Okay, so he's saying that, huh,
Oh, okay. Um, I guess I'll need some more information on that because I've seen a couple videos where they were saying the caste system was a lot older than that. That's definitely something I need to look up more into. रोमन्स की दिविदे एट इम्पेरा की पॉलिसी को अंग्रेज अच्छी तरह निभा रहे थे। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को अत्याचारी आर्यन आक्रमणकारी बताकर उन्हीं के सर उस समय की दिक्कतों का दोष मढ़ दिया गया, जबकि इसकी असली वजह कंपनी की लूट और इस्लामिक काल की कुरीतियां थी। समाज के भेदों को और गहरा बनाते हुए मुसलमानों से गोहत्या फिर से जोर शोर से शुरू करवाई गई। 1871 के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से कई जातियां जन्मजात अपराधी घोषित हो गई। Yeah, I don't like that. ऐसी पॉलिसीज और तेजी से घटते संसाधनों के बीच भारत का प्राचीन सामाजिक ढांचा ढहने लगा। Education. Distract them from learning something which is constructive, pragmatic, efficient. Take away the initiative from people. Take away the responsibility from naturally established links between individuals, group of individuals, and society at large, and replace them with artificially, bureaucratically controlled bodies. विलियम बेंटिक ने 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लाकर भारतीय शिक्षा और गुरु शिष्य परंपरा का अंत भी शुरू कर दिया। मैकॉले के चलते भारत के लोगों को अब यॉर्कशायर की झुग्गी झोपड़ी वाली शिक्षा लेनी थी। मैदान में युद्ध के बजाय किसी को क्लासरूम में हताश कर देना कहीं अच्छा था। लूट से उजड़ चुका समाज परंपरागत पाठशालाओं को दान कहां से देता? एक एक करके पाठशालाएं और गुरुकुल बंद होने लगे। शिक्षा के बिना आबादी अब केवल अनपढ़ मजदूरों और किसानों का समूह बनकर रह गई। हमें व्हाइट मैन्स बर्डन बुलाया जाता था, अंग्रेजों का बोझ। अंग्रेज मिशनरी गरीब बच्चों को घर से ले जाते और उन्हें कॉन्वेंट्स में रखकर अंग्रेजी तौर तरीके सिखाते। जब ऐसी पढ़ाई करके वो बच्चे कॉन्वेंटों से निकलते तो उन्हें अपने ही माँ बाप, अपना समाज अजनबी लगता और चालाक मिशनरी अपने सगे। पिता की जगह अब फादर ने ले ली थी। जिस देश को पूरे यूरोप ने लूटा, उसके बच्चे बच्चे को विश्वास दिलाया गया कि उनकी संस्कृति पिछड़ी है और लुटेरे क्रिश्चियंस के तौर तरीके वैज्ञानिक। इस तरह धर्म, जाति, समाज और शिक्षा हर स्तर पर भारत की भोली भाली जनता का एक्टिव डिमोरलाइजेशन हुआ। And that is an unfortunate thing. When it comes to conversion, right? When when different countries colonize and try to convert the people to their way of things, it does leave that just taste, right? I don't know. When it comes to keeping cultural practices, cultural learnings, cultural ways of living, I think that should have a precedent over changing the mindset, changing the way of life of people. I don't know. There's got to be. I say there has to be not even necessarily a border or parallel, conclusion, a way of coming together for that aspect. But at the same time, then if you're trying to make amends that way, it's like, well, okay, well then are you for people colonizing other countries? And of course you would want to say no, you're not for that. I don't know. It's a lot trickier to go forward with some of this information. It's or some of these, like, history is a very terrible muddled up thing. Right? I I'm all for keeping the way of someone's culture, of someone's way of life, of someone's living. But the West is always been imperialistic. It's always been colonizing. And I'm not here saying all Western countries are colonizers, right? Like every country's quote unquote colonize other countries, other peoples.
But I don't know. It's tough. It really is. It really is tough. It's unfortunate, and I don't know. Of course, I mean the best way to go about it is to learn the past, right? You learn the past. You learn from your forefathers' mistakes. You learn from the mistakes of people that have made those mistakes in the past, and you try to just do better in the future. That's all we can do is try to do better. Next stage is destabilization. Dropouts or half-baked intellectuals are now occupying the positions of power in the government, civil service, business, mass media, educational system. You are stuck with them. You cannot get rid of them. They are programmed to think and react to certain stimuli in a certain pattern. संपन्न परिवारों के बच्चे अब पढ़ने लिखने इंग्लैंड जाते, बैरिस्टर और सिविल सर्वेंट बनते। वापस आने पर इन भूरे साहबों के दिल में मैली कुचली जनता के लिए कोई सहानुभूति नहीं बची रहती थी, बल्कि अब तो इन्हें डर लगता था कि ब्लडी What the heck? विलेजर्स मालिकों को कहीं ज्यादा गुस्सा न दिला दें। इंप्रेशन चौपट हो जाएगा। You cannot change their mind, even if you expose them to authentic information, even if you prove that white is white and black is black, you still cannot change the basic perception and the logic of behavior. ब्रिटिश राज खुश था। राज के संरक्षण में राजे रजवाड़े भी अय्याशी कर रहे थे, पर सबसे खुश थे भूरे साहब। मालिकों ने ब्लैक डॉग्स को रूल करने का पावर अब उनको जो दे दिया था। जिन एलिट्स ने खुद को प्रूव किया, उन्हें गोरों ने जागीरें, तमगे और सम्मान दिया। किसी को राय बहादुर, किसी को खान बहादुर, तो किसी को नाइटहुड। गांवों में बेलख रही जनता की कौन सुन ले? इंडिया और भारत दो अलग सोच बन गए। इसी सदी में भारत के क्लास डिवाइड की लकीरें हमेशा हमेशा के लिए खिंच गई। आम जनता ने भी अब आस छोड़ दी थी। ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अब कभी भी अस्त होता नहीं दिख रहा था। 1947 तक ब्रिटिश राज के एडमिनिस्ट्रेशन का मेन इंजन था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस काउंसिल में इंडियंस को अनौपचारिक मेंबर्स के रूप में चुना जाता था। देश के सबसे बड़े भूरे साहब, जमींदार, राजकुमार, वकील, मजिस्ट्रेट और व्यापारी इसका हिस्सा बनते थे। जाहिर सी बात है, ये वही लोग होते थे जिनकी वफादारी पर क्राउन को पूरा विश्वास था। We think that subverter is a person who is going to blow up our beautiful bridges. No. Subverter is a student who comes for exchange, a diplomat, an actor, an artist. You have your own person who has studied the oppressor, and because he's an insider to the culture, he perfects it to the extent, to levels that no foreigner can. चालाक ब्रिटन्स बहुत पहले से ये समझते थे कि भारत में उनका शासन हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ब्यूरोक्रेसी की बढ़ती निरंकुशता देखकर एम्पायर को बचाने के लिए एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 1885 में कांग्रेस का गठन किया। इरादा था कि हल्के फुल्के रिफॉर्म्स करके 1857 जैसी परिस्थितियां दोबारा बनने से रोका जा सके। इस सेफ्टी नेट के पहले मेंबर्स कौन बने? वही इंपीरियल काउंसिल जैसे भूरे साहब। ह्यूम का डर गलत नहीं था। अंग्रेजों के सबवर्जन से आहत भारत भूमि से अब नई आवाजें उठ रही थीं। छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य 1876 में स्वामी दयानंद सरस्वती की कलम से स्वराज का नारा बनकर निकला। स्वराज, भारत भारतीयों के लिए। You need another 20 or 15 years to educate a new generation of patriotically minded and common sense people who would be acting in favor and in the interests of society. ये आग अंदर ही अंदर पूरे देश में फैल रही थी। बाल गंगाधर तिलक, श्री अरविंदो, बिपिन चंद्र पाल जैसे दार्शनिक उभरे। राष्ट्रवादी विद्वानों के स्वदेशी शोध को पढ़कर नई पीढ़ियां डिमोरलाइजेशन से इम्यून होने लगी।
भविष्य के महान क्रांतिकारी किसी विचारधारा के प्रभाव में पड़े हुए समय की करवट को भांपते हुए इंपीरियल काउंसिल के जेंटलमैन अब कांग्रेस में अटेंडेंस बढ़ाने में लगे। आलिशान बंगलों और तबकों के महान बलिदान का प्रचार करके अब भूरे साहब कुर्ता पैजामा पहनकर स्वतंत्रता सेनानी बन गए। On that stage, students are being sent back, or if they were already in the country, which is the object of subversion, they spring to action. The sleepers go up. एक भयानक तूफान उमड़ रहा था। आजादी की लड़ाई में उग्र देशभक्त क्रांतिकारियों के साथ इंपीरियल काउंसिल के भूरे साहब भी घुल मिल गए। अंग्रेजों के लिए भी ये अच्छी खबर थी। They slept for 15 to 20 years. Now they become leaders of groups, preachers, public figures. They actively include themselves in the political process. Again, on what he was saying there, it's very true, very prevalent right now in the U.S. And I'm speaking from an outsider, really, but you see it a lot. It's very heavy in a lot of universities in the U.S. Communism is on the rise with a lot of the students, right? And it's like it's so ingrained. You go to the universities, you go to colleges, and then you come out a communist. It's very funny. But man, this is some heavy stuff. This really is. Okay. Because I mean, we're going over topics of people selling out their country, essentially, right? Like that's some heavy stuff. You're like it's traitors to, you know, your culture, to your identity, right? You don't want to be a traitor to your people, but you know, this is essentially exactly what we're talking about. Interesting. Okay. इनमें सबसे आगे था इलाहाबाद का अत्यंत धनी और प्रभावशाली नेहरू परिवार और उसके संरक्षक मोतीलाल नेहरू। अंग्रेजियत नेहरू परिवार के खून में थी। 1911 के दिल्ली दरबार में वीआईपी ट्रीटमेंट हो, चाहे सिविल लाइंस की आलीशान पार्टियां, अंग्रेजों ने कभी मोतीलाल को उनके भूरेपन का एहसास नहीं होने दिया। मोतीलाल का नाम किताबों और फिल्मों में महान स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर मिलता है, पर ऐसी कौन सी स्वतंत्रता के लिए वो लड़ रहे थे कि अंग्रेजों कितने चाहते थे। प्रसिद्ध बैरिस्टर मोतीलाल शायद ही कभी किसी क्रांतिकारी का मुकदमा लड़ने के लिए खड़े हुए। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान को काकोरी कांड में फांसी की सजा मोतीलाल के रिश्तेदार और मित्र जगत नारायण मुल्ला ने दिलवाई। मोतीलाल जी बेटे के कैरियर से ज्यादा चिंतित थे। बेटे की पढ़ाई खत्म होने के पहले ही मोतीलाल ने बड़ी सफाई से खुद को कांग्रेस का किंग मेकर बना लिया। भारतीय जनमानस के सबवर्जन में अनजाने ही सही, लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। Among the lot of freedom fighters who fought for India's independence, Gandhi was identified as the least threatening. Okay, so he turned the entire direction of the freedom struggle. Plus, he had a mass following at all strata of the society. You have to give it to him. He had a mass following which no other leader had. अगर किसी ने गांधी का हिंद स्वराज पढ़ा हो तो वो ऐसी अजीब सी किताब है कि वो उसमें खुद से सवाल पूछे जा रहे हैं, खुद से उसके उत्तर दिए जा रहे हैं। उसमें उनकी अहिंसा की एक बड़ी अजीब सी अवधारणा है, जिसमें ये कहा जाता है कि चोर को मत मारो। क्यों? क्योंकि मान लो तुम्हारा पिता ही तुम्हारे घर में चोरी करने आ जाए तो क्या उसको मारोगे? अब आप इस लॉजिक की कल्पना मैं तो नहीं कर सकता। इस तरह का लॉजिक जो है वो गांधी जी ही दे सकते थे। 1928 में मोतीलाल ने गांधी से सोर्स लगवाकर बेटे जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष बनवा दिया। यहीं से कांग्रेस में परिवारवाद की परंपरा का शुभारंभ भी हो गया। Nepotism, of course. Pure as crystal, truthful beyond suspicion, and said, "The nation is safe in his hands." नेहरू एक सच्चे भूरे साहब थे। भारत की जमीनी सच्चाई से मीलों दूर फेबियन सोशलिज्म वाले क्रांतिकारी थे। इलाहाबाद और इंग्लैंड में अंग्रेजों के बीच पले बड़े नेहरू गलत समय पर गलत जगह आकर खड़े थे।
पापा की पार्टी के अध्यक्ष बनकर वे भारत को पूर्ण स्वराज दिलाने वाले नायक बनने के सपने देख रहे थे, पर शतरंज के प्यादे तो कोई और ही सजा रहा था। एम्पायर के क्राउन का सबसे बड़ा हीरा भारत था। भारत में जब स्वतंत्रता एक निश्चित सच्चाई बनकर उभर रही थी, उसी दौरान अंग्रेजों ने इंपीरियल काउंसिल के एक और बूढ़े साहब को लंदन में कल्टीवेट किया, मोहम्मद अली जिन्ना। Winston Churchill specifically cultivated Jinnah. I think the India House or one of those institutions in England, they recently released all this correspondence with Jinnah and Churchill, meeting minutes and the correspondence that they had. Jinnah was cultivated specifically by Winston Churchill and some of the British leaders. 15 years ago, he did his dirty job and nobody cared. Now he makes it a political issue. He demands recognition, respect, human rights, and he rallies a large group of people. And there are violent clashes between him and police, his group and ordinary people. That is destabilization. Now the root of the Dravidism has been set. The root of the Khalistan has been set. There's a period when the Islamists are thrown more toward the radical Islamic ideas. We see in the 1920s how the people, the Muslims of the southern belt, that is the Muplahs, they were really mobilized to fight for a caliphate, which even the Turkish people didn't want. Then comes the era of the communists in the 1940s when they spoke about the splitting of the various factions wherever there is a Muslim majority. So there were a lot of things which were happening, a lot of movements, a lot of separatist idea which were really brewing more and more in India. जिन्ना और उसके साथियों ने 1945 आते आते भारत के सांप्रदायिक हालात काफी बिगाड़ दिए थे। पूरा देश जल रहा था और कांग्रेस के सभी आंदोलन असफल हो चुके थे। बूढ़े साहबों ने सही समय पर पाला बदला और नेताजी की प्रसिद्धि की लहर पर चढ़ गए। ब्रिटिश राज ने भूल करते हुए आजाद हिंद फौज के ऑफिसर्स पर देशद्रोह के ट्रायल्स शुरू किए। आजाद हिंद फौज के जवानों के लिए पूरा देश एकजुट हो गया। सिविल वॉर की आग नेताजी की प्रसिद्धि के आगे फीकी पड़ गई और उल्टा राज ही निशाने पर आ गया। खतरा महसूस करते हुए राज ने जिन्ना को आगे बढ़ाया। अब समय था सबवर्जन के अंतिम चरण का, क्राइसिस। Destabilization process usually leads directly to the process of crisis. It may take only up to 6 weeks to bring a country to the verge of crisis. I just want to apologize. I'm not commentating as much as I used to, right? Because if you see a lot of my other reaction or commentary videos, you know, I'm trying to, you know, interject as much as possible, right? You want to try to get fair use going. There's just a lot of information here that I'm trying to process and trying to understand. I mean, it is concepts and things that you know you don't necessarily think of or you read of in like a history thing, in a history video, history book or something. But yeah, interesting. It's very, very interesting stuff. A lot of things that I just feel like I didn't really know and know about prior. And if see, this just makes me want to read even more up on the history of what exactly was going on, right? And see this, there's just so much to learn. There's so much to learn. Let's go ahead and finish this video out. गांधी ने 1928 की अपनी गलती फिर से दोहराई, जो इस बार पूरे भारत को महंगी पड़ने वाली थी। करोड़ों लोगों के बलिदान से आजादी की लड़ाइयां अब अंतिम चरण में थी। जो भी अब कांग्रेस का अध्यक्ष बनता, आजाद भारत के प्रधानमंत्री का पद भी उसे ही मिलता। और सबके प्रिय नेता थे सरदार पटेल। There were 15 Congress state parties. Out of 15, 12 elected Patel. Not even one gave any vote to Nehru. जनता चाहे बोस को चुने या पटेल को, आगे वो हमेशा नेहरू को ही खड़ा पाती थी। भूरे साहब को द लास्ट इंग्लिश मैन टू रूल इंडिया जो बनना था। The population at large is looking for a savior. Population is sick and tired already. A savior comes and says, I will lead you, who is half-baked intellectual, sometimes graduated from Harvard University or Berkeley. डायरेक्ट एक्शन डे
जिन्ना ने डंके की चोट पर हिंदुओं का नरसंहार किया। पूरा देश सिविल वॉर में धधक उठा। आईबी के डायरेक्टर का लंदन को एक सीक्रेट नोट, द गेम सो फार हैज बीन वेल प्लेड। नेताजी के समर्थन में सशस्त्र सेनाओं का विद्रोह भारत में रह रहे सभी अंग्रेजों के लिए जान का खतरा बन गया। क्लेमेंट इटली ने भारत छोड़ने की तारीख तय कर दी, जून 1948। अमेरिका ने कम्युनिज्म और साम्राज्यवाद को खत्म करने की अपनी नई फॉरेन पॉलिसी की घोषणा की। खरबों के उधार में दबे ब्रिटेन के पास बिग डैडी अमेरिका की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। यूएस और Okay. That line made me laugh. Sorry, I know it's a very serious moment here, but that was a very comedic line there. पास बिग डैडी अमेरिका की बात मानने के अलावा और कोई Okay. चारा नहीं था। यूएस और ब्रिटेन का एक नया जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट जन्मा, भारत का पार्टीशन। आनंद फानन में डिकी माउंटबेटन को इंडिया का वॉइसरॉय बनाया गया। उसे एक फाइल मिली जिस पर लिखा था ऑपरेशन मैड हाउस। नेहरू माउंटबेटन से शिमला में मिले। डिकी ने नेहरू को ट्रांसफर ऑफ पावर का पहला प्लान दिखाया, प्रोजेक्ट बैल्कन। भारत के निर्दयी पार्टीशन का प्लान देखकर नेहरू साहब बिल्कुल घबरा गए, पर मशोबरा की वादियों में उनकी खास दोस्त एडवीना ने उनको संभाला और अंत में राजी करवा दिया। He comes back to his country and he thinks that he knows the answer to all the social, economical problems. माउंटबेटन ने अचानक घोषित किया कि ट्रांसफर ऑफ पावर जून 1948 की बजाय 15 अगस्त 1947 को ही हो जाएगा। बस 10 हफ्तों में सब भौचक्के थे। उसी दिन शाम को भारत का विभाजन रेडियो पर अनाउंस हुआ। मुसलमान और हिंदुओं में दंगे शुरू हो गए। स्वतंत्रता संग्राम का सबवर्जन साहेबों को माध्यम बनाकर अब पूरा हो गया था। So we have two alternatives here. Civil war and invasion. सिविल वॉर शुरू होने के कुछ घंटे पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने शैंपेन खोली और इंडिया के नाम टोस्ट किया। नेहरू साहब ने जाम उठाया और कहा टू किंग जॉर्ज द सिक्स्थ। The time bomb is ticking. With every second, the disaster is coming closer and closer. आधी रात को अचानक से दिल्ली में ढोल ताशों का शोर हुआ। घर में खुशी से उछल रही अपनी बेटी को देख वॉइसरॉय के एडवाइजर वीपी मेनन ने आह भरते हुए कहा, हम सबके सबसे डरावने सपने तो अब सच होने वाले हैं। All right. Interesting. Very, very, very interesting. Definitely left me wanting to know even more, right? Um, it just I feel like I feel like I didn't get enough information. Like I wish this was 3 hours long instead of 30 minutes long. That's how much I wanted to keep watching. Now, I mean, I do understand that the next video I believe is out because this one is a year and a half old at this point. Whew. Okay, so wow, it tells a story of basically people betraying their country, essentially, right? Those who you thought would be your leaders are actually betraying their people. I'm interested to see what the comments say. I really, really am. I see there's 15,000 comments here. I want to go through a few of them. Watching this was with great admiration, amazing research and production. Kudos to the team. I'm from Nepal, but it really doesn't matter because I'm a
I can't pronounce that word, Hindu. Thank you so much for sharing such a deep, unknown history of our ancestors. I'm 21 years old. When I was in my teens, I used to question my religion, rituals, and criticize it. But as I aged, I just asked myself a question. India faced multiple invasions. I'm still Hindu, but millions are forcefully converted to Islam and Christianity. I'm Hindu because of my ancestors. They struggle to keep our religion, faith, family, ethics alive. My ancestors face a lot. I'm Hindu, which is old, very old, and I'm part of this magnificent something which is such a great pass on generation to generation. I'm such a fool to question this faith. Given my ancestors to me, I should treasure it. And yeah, I mean, if you are faithful, you should treasure, whatever religion, whatever faith you are following. Um, Definitely, keep. You should try, right? You should try to remember your ancestors, remember their teachings, remember their followings, and you should always strive to learn more. That should be the goal of human life, is a constant cycle of learning and learning. And then once you've learned, you want to impart that learning onto others. So as a Bangladeshi Hindi, I'm really grateful to the team for presenting the history. The person who gave voice to this documentary is surely a legend. His voice has a great contribution in making this documentary so powerful, important. Shocked but so glad the truth was finally come out. Great work by the team. Let's spread this like wildfire. Thanks. I'm a student of class 9. I was almost brainwashed due to my textbooks. The Indic Revolution saved me. Congratulations from Bihar. This is also covered recently in A&I podcast by Samita Prakash with Sanjeev Sanyal. God, I'm so bad with names. How real revolutionaries never get recognized. This is really good, and 2 million views already. Indians Awakening. Surprisingly, the English version of this eye-opening documentary has disappeared from YouTube. Oh, there's an English version. I didn't know that. This must have been done deliberately to limit its reach and penetration. I don't know. I mean, I'm here. I'm watching it. Sanskrit and Hindi are pride, but English version needs to stay on YouTube and reach the Indian diaspora abroad and the international community. Hope my fear is well founded. East Indian Company never left India. They just went digital. I hope you understand what I'm saying. YouTube has the power to ban and remove any content. Uh, I would look into something a little bit more before saying something like that. I mean, because you shouldn't have, the language of something shouldn't be the limitation. As long as there is a translation, which of course, there is a English translation subtitle here, right? As long as there's subtitles, you should be able to watch anything. I mean, I watch things all the time in different languages, thanks to subtitles. Um, I was a bit depressed before watching this, was questioning my purpose and meaning in life and this world. While I was watching this, I realized that being a man born in this era in India is a privilege. One of our ancestors bled for. The opportunity I had from the first breath I drew, we young Indians can finally live and thrive for our Sanatan Dharma, for our Bharats, and fight the dogmas of Sahebs. Just as a consolation along the way, thanks Pratyam for instilling that sense of purpose that lingers in our DNA, which all the oppressors tried to exterminate but never could. As a child born in 2000, this is a shocking reality check for me, which I never expected. It left me in tears in my eyes, which had been done into our culture. Yeah, so pretty heavy stuff, right? Right. I mean, essentially the documentary is saying, it's the erasure of culture. It's the erasure of religion. It's the takeover of those who you thought you could trust, but turns out they didn't care about you, right? Yeah, I just want to learn more. Watching this just makes me want to learn a lot more about everything, to be honest. Because I mean, this is definitely stuff that I did not know prior to watching this. I mean, I had a vague understanding of a lot of it, right? I have been watching and reacting to a lot of videos as of late. Um, but when it comes to India, I've only been learning about India for
6 months at this point. So it is all relatively still new to me. So I don't know. I don't know. With that being said, thank you for watching, everybody. I feel like I'm gonna have to rewatch this, which is probably what I'm gonna do. I'm gonna go and get a drink, maybe get something to eat, and rewatch this again to try to get a better understanding of everything. Um, and then in the future, I'll watch the second part as well for a reaction. But yeah, thank you for watching, everybody. Remember to leave a like, subscribe, leave a comments. If you have a video you want to recommend me, let me know down below. I will just go ahead and preface this by saying that I have like 50 videos. I have like 50 videos lined up for me to react to. Um, because everyone keeps recommending me so many cool videos that I want to actually sit down and watch. But yeah, I'll try to get through them. I got a while, right? That's all we have is time, right? So, thank you for watching. Take care. Goodbye.